हेलो गाइस, वेलकम टू द EduAcademy। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल से, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी में प्लेसमेंट लिया है जिसका मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हर स्टूडेंट का सपना होता है। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के बारे में ज़्यादा जानने बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप टीवी पे ऐड देखते हैं और जहाँ भी मुझे लगता है इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको मारुति देखने को मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले राहुल, थैंक्स फॉर कमिंग टू द EduAcademy। एंड मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है वो आपके जूनियर्स को और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल महसूस होगी। तो राहुल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में और अपने ब्रांच के बारे में और कंपनी में आपकी क्या प्रोफाइल है और कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। So, my name is Rahul Kumar and final year मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ MNIT जयपुर में। एंड अभी मेरा प्लेसमेंट सितंबर में मारुति सुजुकी में हुआ था, जो हमारे कॉलेज विजिट करती है, कॉलेज कैंपस को। सो मारुति इज अ ब्रांड इन Indian market and it has more than 50% in Indian market value. And so actually Maruti is capturing the market at a stupendous rate, so it needs no more introduction. And about my profile in Maruti Suzuki, so I have opted for production engineering and supply chain division. So in the production, it is mainly about how the cars are manufactured, and so the process that is related to it. And in the supply chain, we are more concerned about the logistic part, about the sales part, about the order receiving and selling of the cars, like that. तो राहुल, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। जब कंपनी आपकी कैंपस में मतलब रिक्रूटमेंट के लिए आई थी तो क्या प्रोसीजर था? ये 3 स्टेप का ये प्रोसेस था। फर्स्ट वन इज द एप्टीट्यूड राउंड एंड इट वाज कंडक्टेड बाय MCAT। सो जो टेस्ट था एक नॉर्मल पैटर्न था, दैट इज द क्वांट एंड इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, एंड देन देयर वाज द लॉजिकल रीजनिंग। सो लेवल इज ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया वेक्स या कैरियर ब्लेस फॉलो करते हैं, सो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एंड इंग्लिश भी कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी थे, जो वी स्टडी इन आवर डे टू डे लाइफ, सो दैट वुड बी नॉट great issue for we as a student. And लॉजिकल रीजनिंग भी काफ़ी इजी था। सो ये एक रिटन टेस्ट के बाद एक प्रेजेंटेशन राउंड था, दैट वाज नॉन एलिमिनेटरी। लास्ट ईयर तक ये एलिमिनेटरी था, बट फ्रॉम दिस ईयर इन आवर कॉलेज इट वाज नॉन एलिमिनेटरी, एंड देन इट वाज फाइनली कंक्लूडेड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। तो राहुल, जैसे कि आपने बताया कि ये नॉन एलिमिनेटरी था, मतलब एलिमिनेट नहीं करते हैं लोग, तो मैं जानना चाहूँगा कि सिग्निफिकेंस क्या है? अगर एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं तो कंपनी इसको क्यों कंडक्ट कराती है, उनका मोटिव क्या है? So after when I cleared the test, and actually I think that approx 50 to 60 students appear for the test, and in that they selected about 12 students. So after that there was the presentation round. So the presentation round was basically about on the 2 topics. First was that what is the latest achievement that in your past few years, that आपने अभी तक अपने पिछले वर्षों में क्या आपको लगता है कि जो सबसे अच्छा अचीवमेंट है आपका, उस पर आपको एक स्लाइड बतानी थी। और दूसरा ये कि आप मारुति सुजुकी में कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहते हो। एक तो एक्चुअली मारुति सुजुकी 4 डिपार्टमेंट पे वर्क कर रही है, R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड सप्लाई चेन। सो तो आपको ये 2 डिपार्टमेंट चूज करना था और बताना था कि आप ये 2 डिपार्टमेंट क्यों चूज कर रहे हैं। सो यू हैव टू कम विथ अ परफेक्ट आंसर, एंड योर एक्सपीरियंस दैट यू हैव लर्नड इन योर कॉलेज, दैट शुड मैच विथ योर द department or the profile you are opting for. You are opting in Maruti Suzuki. So in the presentation, actually the vice president of company visited us for our interview purpose and presentation. So actually it is said that the first impression is the last impression. So how you deliver your ideas to the वाइस प्रेसिडेंट, दैट वाज अ मोर कंसर्न्ड थिंग। सो वहाँ पे वो आपका ये जानना चाहते थे कि आप कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, या आपको क्या लगता है कि जो आप में क्वालिटी है या जो आपने डिपार्टमेंट ऑप्ट कर रहा है, क्या आप एक परफेक्ट पर्सन हो उसके लिए, कि
मतलब ऐसे नहीं कि आपने हवा में कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा लगा मैंने चूज कर लिया, अपने नहीं। एरिया से choose हाँ, आपको आप जो भी डिपार्टमेंट आप R&D चूज करना चाहते हो, तो क्या आपने R&D में जो वर्क होता है, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, मॉडल, प्रोटोटाइप, तो क्या आपने कॉलेज में कभी ऐसा किया है? या प्रोडक्शन में, तो क्या आपने कभी प्रोडक्शन में ऐसा वर्क किया है? या सप्लाई चेन में, तो क्या आप सप्लाई चेन के बारे में इक्विप्ड हो? बिकॉज यू कंपनी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट you start from scratch. Company don't think, company wants to just you should have something when you enter a company, and then the company will mold you. So basically company wants to know, so the interviewer, that who was the vice president, so he wants to know that whether we have some knowledge about that. So he wants to check us that that what we have the knowledge and why we are choosing for. So I have chosen the production department and supply chain. So why I have chosen? Because I have done a project, and as my training was in the production, I have done my training in railway, that is a workshop, railway that is a maintenance workshop, railway maintenance workshop. So there I came with the very basic purpose of all the CNC, turning, lathe, everything, welding, like all the process. So I come to know that I have some knowledge. And then also there was a project in our course that was also some related to the manufacturing. Therefore I opted the production department. And the second, I opted supply chain, because at the same semester in which our interview was going on, we were studying a course on supply chain that was equipped in, that is in our course. So the course was on the supply chain, and we are about to do a project in which we have to go to a nearby store, and we have to find out that how the market comes into place. Suppose that there are 4 players in the market, that is the supplier, manufacturer, wholesaler, retailer. So we have to study all these factors. So I thought of that this would be a more better choice, because I have some knowledge about it. So in this presentation I showed them that yeah, I have some knowledge. And तो राहुल, अब मूव करते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ कि आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके कितने राउंड हुए थे इंटरव्यू के, कंबाइंड था फिर अलग अलग थे, क्या आपका एक्सपीरियंस था? So as I was expecting that there would be 2 rounds, but to my surprise, there were actually there were 2 person in the interview. That one was the vice president, and I think one was a new guys from who had done his MBA recently and joined Maruti Suzuki. So but the interview was combined. So actually the technical person who was the vice president, he was also asking some HR questions. So my interview go in this manner, that first they asked me that tell me about, actually in the presentation I have told them that my latest achievement is that I was selected for the internship at Mahindra, because Mahindra visited our campus for internship program and I was selected. So I focused on that point, that among all the students I was selected, only 2 were selected and I was one of them. So on that point they noted this point. So just when interview started, they asked me the question that what internship you had done at Mahindra, yeah, what was your work at Mahindra. So my advice to everyone is that prepare your internship in such a way, in a training in such a way that you can captivate the interviewer. This is the most important part of any interview, because actually if you want to enter in a core company, so the interviewer wants to know that how is the learning process in your mind, how much you can devote to the company, yeah, how much you have the tendency to learn. So the more better you explain about your training and internship, so that makes more probability of selection in your interview. So I was prepared for that, and I explained them in a very in a so layman manner that what was actually my work at Mahindra. So I explained them that I was at dimensional engineering department, why. So adding some point, that I explained the vice president that who was the head of the production department, that no manufacturing is precise. So basically I explained all the internship in a minute every detail which I could.
So then the interviewer seemed impressed, and then he asked me, then he moved to the then he asked me that what are your favorite subject. So actually you have to prepare for any person. I am saying that prepare your internship and your 2 or 3 favorite subject in a most beautiful manner you can, because as you answer these 2 questions, then your interview is almost done. So I was prepared for that, and he asked me that what is your favorite subject. I told them that thermal engineering and refrigeration and air conditioning. So then he asked us some basic question, that what is thermodynamics, what is heat transfer, what are the modes of heat transfer, then which is the most effective way of heat transfer, conduction, convection or radiation. Then adding to my surprise, he then jumped to the point that what is escape velocity, then what is the value of escape velocity. I was not expecting that, but actually being a mechanical and some physics I have so I easily handled it, and I told them. So at the last he asked me that the vice president asked me that what was one thing that you don't want to do but you have to do forcefully to yourself. क्या ऐसा चीज़ था जो आप नहीं करना चाहते थे पर फिर भी आपको करना पड़ा. So at that moment the answer was not striking me, but since I have to do answer quickly, so then I told that the subject which I don't like. So he laughed, giggled, and then he said that that's a quite interesting answer, but that doesn't seem complete. So मैंने कहा कि सर अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, यही है. So then in this way my interview get concluded. After listening your interview, it seems that your concept was very good, your internship was very good, and I think एक डाउट जो सबको आता है स्टूडेंट्स को कि जब इंटर्नशिप के लिए जाएं तो what the observations should be kept in the mind while doing the internship, and I think you have very nicely defined it. So thank you Rahul, thanks for coming to the EduAcademy. I think this video is going to help to the student who want to take the placement in the Maruti. So अगर आपको लगता है अभी भी कि हमने अगर कोई पॉइंट कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो इससे पहले मैं राहुल आपसे कोई एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मांगना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि हमने इस डिस्कशन में कवर नहीं की है. लोग कुछ एडवाइस है मेरी तरफ से. फर्स्ट वन दैट टू एवरीवन दैट प्लीज कवर योर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैशन you can. I am insisting you all that please cover it, because the moment you cover it properly, the selection probability gets stronger. Second point, since Maruti is it is true that Maruti has the largest share, and so they opt for the most brilliant student of in any college. Actually they visit only IIT and NIT, and they told us that only 200 students from all over India they will select. So it is obvious that they will choose a student who has better CGPA, and it is quite good. But what I want to focus that it doesn't mean that an average CGPA, a student which has an average CGPA can't get selected in Maruti Suzuki. I being an average CGPA, I got selected because I feel that the way I presented my answer and the way I responded in my interview and the confidence with which I handled the interview, that proved to be a milestone in my selection process. तो गाइज राहुल के एक्सपीरियंस को सुन के काफ़ी अच्छा लगा. तो मुझे लगता है कि आप भी जो राहुल ने बताया है इंटर्नशिप के बारे में या फिर कंसेप्ट के बारे में, जो भी प्रक्रिया इन्होंने बताई है, मुझे लगता है आप फॉलो करेंगे और सिलेक्शन लेंगे और एक दिन आप भी राहुल की तरह यहाँ पर आएंगे और इंटरव्यू देंगे. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमें ताकि आप जो हम वीडियो डालते हैं आपको सबसे पहले मिल सके. तो गाइज मिलते हैं EduAcademy के अगली वीडियो में. थैंक यू.